Most welcome all of you again in my third video. We are understanding about the next modal should. Should is the past form of shall. Should is the past form of shall. It is used to show advice or suggestion, just like you are weak, you should go to the doctor. Means the speaker is advising to the person and he is suggesting that you are weak, you should go to the doctor. And it is also used to show duty. We should love birds and animals. It is our duty to love the birds and animals. To show expectation, just like he should be at the theater. It is expectation. And probability we will learn in ought to. As a probability we will learn ought to. And it is also used with lest, just like walk carefully lest you should fall. Walk carefully lest you should fall. So we have used should to show advice or suggestion, duty, expectation and with lest in हिंदी. शुड सबसे पहले तो हम समझे तो शाल का पास्ट फॉर्म है शुड. इसका यूज सलाह या फिर सुझाव के लिए होता है, जैसे यू आर वीक यू शुड गो टू द डॉक्टर. आप कमज़ोर हो, बीमार हो, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो कहने वाला सलाह या सुझाव दे रहा है. दूसरा ड्यूटी के तौर पे वी शुड लव बर्ड्स एंड एनिमल्स. हमें जानवरों और पक्षियों से प्रेम करना चाहिए, यानी उन पे दया रखनी चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है. एक हम अनुमान लगाते हैं, ही शुड बी एट द थिएटर. वे अभी कहाँ होना चाहिए? थिएटर में. हमने अनुमान लगा के एक्सपेक्टेशन से बोल दिया तो शुड का यूज. एक जब भी लिस्ट आएगा 100% हमारे एज ए मॉडल ऑक्सिलरी में क्या आएगा? शुड. वर्क केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल. ध्यान से चलो, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, तो लास्ट का यूज ऐसा ना हो कि. ध्यान से चलो, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ. सो वी हैव यूज्ड शुड विद advice or suggestion, duty, expectation and with last. Now we will, our next model is must. What? Must. Must is used to show compulsion, strong possibility, strong necessity or strong advice. And must not, mustn't is used to show prohibition, and must is also used to show obligation. Just like we must follow norms of school, rule and regulations of school. What is this? It shows compulsion. It is very compulsory for us to follow the norms of school. We must have O2 to save our lives. Means it is very strong necessity of oxygen to save our lives, for our lives. We mustn't park our vehicle at public places. It is prohibition, totally prohibited that we mustn't park our vehicles at public places. It is also used to show obligation, means we must follow traffic rules. It shows obligation and compulsion that we must follow traffic rules. In हिंदी मस्ट का प्रयोग सबसे पहले कंपल्शन, अनिवार्यता, नहीं चाहते हुए भी मानना पड़ता है, तो कंपल्सन. स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, हद से ज़्यादा कोई संभावना हो, हद से ज़्यादा आवश्यकता हो, या ऐसी सलाह जो बहुत ज़रूरी हो मानने, तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं. मस्ट नोट का यूज़ हम किसी को निषेध, मनाही के लिए करते हैं, जो पूर्णतया टोटली मनाही है, निषेध है. और एक बाध्यता हो तो मस्ट का प्रयोग करते हैं. मस्ट नोट का यूज़ प्रोहिबिशन, बाध्यता के लिए करते हैं. वी मस्ट फॉलो नॉर्म्स ऑफ स्कूल. ये हमारे लिए अनिवार्य है कि स्कूल के नियम कानून हमें मानने ही चाहिए, नहीं तो पनिशमेंट है. वी मस्ट हैव ऑटो टू सेव अवर लाइफ. हमें हमारे जीवन को बचाने के लिए या जीवन को चलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता जरूर होती है, नहीं चाहते हुए भी होती है. वी मस्टंट पार्क आवर व्हीकल्स एट पब्लिक प्लेसेस. डियर स्टूडेंट्स, नहीं चाहते हुए मीन्स हमें चाहिए, ये तो जरूरी है. वी मस्टंट पार्क आवर व्हीकल्स एट पब्लिक प्लेसेस. हमें पब्लिक प्लेसेस पे अपने व्हीकल्स क्या है कि पार्क नहीं करने चाहिए, ये मनाही है, निषेध है. सो वी हैव यूज्ड मस्ट टू शो कंपल्सन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, एडवाइस, एंड मस्ट नॉट इज यूज्ड फॉर prohibition. Now we are understanding about ought to. Ought to is used to show moral duty or moral obligation. It is our moral obligation that we do as instructed. We ought to respect our elders. It is our moral duty that we ought to respect our elders. Second, you ought to be more careful about your duty. It is advised that
about your duty, we ought to be more careful. Now, she ought to be present here. Believe. It is her expectation, probability that she ought to be present here. She ought to be at the cinema by now. It is a probability that she ought to be. It is probable she is in the cinema by now. Thus, dear students, we have completed our modal auxiliary. ought to का यूज सबसे पहले मॉरल ड्यूटी. देखो मॉरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन क्या, जिसको नहीं करे तो हमें देखो पनिशमेंट तो नहीं है, लेकिन फिर हमारा ऑनर नहीं होगा, लोग हमें सम्मान नहीं करेंगे. जैसे हम बड़ों का आदर नहीं करेंगे तो लोग हमें अच्छा नहीं कहेंगे. तो ये हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन ड्यूटी है कि हमें उनका सम्मान करना चाहिए, बात कहनी माननी चाहिए. You ought to be more careful about your duty, about your health. अपनी कर्तव्य, अपने हेल्थ के बारे में हमें और ज़्यादा सजग रहना चाहिए. ऐसी सलाह के लिए यूज़ करते. कोई ऐसा एक विश्वास जिस पे हम मान के चलो जानते हैं कि शी ought to be at present here, मतलब वह यहाँ अभी होनी चाहिए जैसा हमारे नॉलेज में है. शी ought to be at the cinema by now, अभी वो इस समय कहाँ होनी चाहिए, सिनेमा में. तो ये क्या है, एक संभावना है. तो प्रोबेबिलिटी, मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन, टू एक्सप्रेस एडवाइस, बिलीफ बेस्ड ऑन स्टडी, for all these we use ought to. I hope you have understood very well. Thank you very much.